bookkeeping has pretty much become automated. मेरी जवानी में a trial balance out हो जाता था, which was the biggest nightmare an accountant could have. The payout that we have compared to the payouts that they have are infinitely different. The employer will not go out of the way to find you. There is somebody who needs to write the books, make sure everything is compliant, give assurance on those things, legally guide them, manage transactions for them. Mergers and acquisitions are things that computers cannot do for you. Assalamu alaikum sir, thank you so much for joining. Walaikum assalam Mehtab, always a pleasure being with you, talking to you. Thank you. अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़ी अकाउंटिंग के बारे में बात होती है कि अकाउंटिंग का कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, इट्स अ डाइंग करियर. तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? It's a dying career. Yes. No, it's not a dying career. It's not dying anytime soon. जब तक businesses हैं, accounting will stay in place. Accountants will stay in place. हाँ, the role that accountants have might change. I mean, एक बात है जो मैं अक्सर बेशतर किया करता हूँ कि हमारी जवानी के ज़माने में bookkeeping was what an accountant would do and that was it. And bookkeeping has pretty much become automated all over the world. Pakistan is catching up as well. बल्कि अभी आजकल ये जो आपके नए ERPs आ गए हैं, Odoo is one of them. There is QuickBooks and all the other software which are very easy to install and they take care of the basics. I mean, debit credits are always up. मेरी जवानी में ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता था जो एक बड़ी कॉमनैलिटी थी, which was the biggest nightmare an accountant could have. अब ज़ाहिर है with all these software and ML and AI, that is virtually impossible, right? अगर आपकी एंट्री पूरी हो रही है तो the trial balance cannot be not reconciled. So what an accountant will be required to do might change. In fact, I mean, this really, I don't know if I should include this here, लेकिन अभी just a couple of days back, यहाँ पे पाकिस्तान में, I was invited to a talk which was by a tech company. I'll not take names because this is still a work in progress and that was more of a fact-finding situation. And they're considering of launching something which will be, I'm mincing my words because I don't want to give out things that are not public information yet. They're working on something which will emulate ChatGPT for accountants, right? And Zahir, that will make work for bookkeeping and accountants much easier. But what we need to understand, what we need to appreciate is the brains behind that are still hardcore accountants like you and I. So accountants will not go out of work. We need to enhance our skill set. We need to stay up with changing times to stay relevant. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हुक्म. I'll add to what I wanted to say. अच्छा सर, like कोई बंदा ग्रेजुएट है या मास्टर्स उसने किया है या कोई उसके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, नॉलेज आ गया, अभी इंडस्ट्री में गए, चले जी हमें क्विक बुक्स सीखना है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखना है. अगर एक बंदा वो सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाए, क्या वो अपने आप को अकाउंटेंट कह सकता है? Accountant, yes. Bookkeeper, yes. I'll say bookkeeper, yes. Accountant, no. क्योंकि देखिए bookkeeping is a part of accounting. A QuickBooks चलाना is basically, I don't want to undermine that ability, लेकिन that is more of a data entry job. Correct me if I'm wrong, right? So having the ability to process a transaction is what makes you an accountant. Being able to classify things according to the requirement is what makes you an accountant. Bookkeeper has always been somebody कि जी इस वाले general ledger में इस subsidiary ledger को आपने up to date रखा. Right. So that's the difference, and I will stress on that still being a difference. If you don't have the qualification for it or you don't have the experience for it, you might be a bookkeeper, you might be a data entry guy, you will not be an accountant. चलें, अब फिर accountant actually क्या है? Actually उसका core task देखें तो सॉफ्टवेयर भी इन प्लेस हैं, वर्किंग भी है, चलें इसमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी, कुछ मैच नहीं हो रहा, मंथ एंड क्लोजिंग भी हो रही हैं, बट अकाउंटेंट क्या है अगर आज की इस सिनेरियो को देखें? देखें आज के दिन इवन विथ सॉफ्टवेयर लाइक क्विकबुक्स एंड ओडो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो सॉफ्टवेयर बना रहा है. एन अकाउंटेंट नीड्स टू वेट इट कि इज इट रियली द वे इट शुड बी, सही वाला बैंक, सही वाली रिकॉन्सिलिएशन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, और उसके ऊपर फिर जो डिसीजन मेकिंग एक फाइनेंस गाय ने करनी है वो एक अकाउंटेंट ने एसिमुलेट करनी है. सो एनीबडी हु हैज़ दैट इंफॉर्मेशन एंड कैन प्रेजेंट that information is an accountant. Right. अच्छा सर, वर्ल्ड इज चेंजिंग, लाइक सऊदीया विजन 2030 का आपको पता होगा, अभी दुनिया गैप से IFRS की तरफ मूव कर रही है, तो वहाँ पे अकाउंटेंट्स की कितनी नीड है जिनके पास एक्सपर्टीज है इन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग वगैरह, तो आप क्या कहते हैं इसमें? I think the whole globe has a very big paradigm shift. I mean, Saudi, you are very right. That is a boiling hot pot. जिधर आजकल opportunities are overflowing.
I will take the liberty and say other parts of the world, like the UK, like Ireland, wahan pe Brexit, COVID, all these things have brought about a lot of changes. People have started realizing the importance of entrepreneurship. So people who had a 9 to 5 white-collar or blue-collar job, they decided not to continue with those disciplines and started things of their own. उसके रिजल्ट में ये हुआ कि देर हैज़ बिन ए सिग्निफिकेंट डेफिसिट. मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव एज अ फर्म ये बता रहा हूँ कि आज से 6-8 साल पहले वी हैड नो शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल स्टाफ. मैं बात करूँ क्वालिफाइड स्टाफ की या पोस्ट आर्टिकल एक्सपीरियंस स्टाफ की. दे वर वेरी विलिंग टू कम एंड बी अवेलेबल. इस वक्त देर ऑल sort of leaking into these other parts of the world because there is infinite possibilities. And can I compete with those possibilities? No, I cannot. The payout that we have compared to the payouts that they have are infinitely different. So yes, there are opportunities in Saudi Arabia, in all over the world, in Pakistan as well. मुझे जिस चीज़ का थोड़ा सा एक अलमिया, I mean, मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी में भी हंस रहा होता हूँ कि सारे लोग जा रहे हैं तो हम लोग जो रह गए हैं, they'll make something out of what is left क्योंकि nobody is staying behind. But there's lots of opportunities. अच्छा सर, अपॉर्चुनिटीज भी हैं जी. अकाउंटेंट्स की कमी के बारे में भी सुना जाता है, रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, बट वहीं पे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो ये गैप जो है इसको कैसे कवर किया जाए? थोड़ा सा वहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए. आर वी टॉकिंग अबाउट आउटसाइड पाकिस्तान, इन पाकिस्तान? बोथ. देखिए, whenever I'm going somewhere, I need to benchmark my requirements with their expectations. Just having landed there with certain qualifications, like no relevant experience, makes me a misfit. Or har induction process mein, you need to make sure that you fit the bill. If you don't fit the bill, you will not be hired. अपनी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. एक individual who is very aptitude wise smart लेकिन हैज़ नॉट रिटन द पेपर्स और इज नॉट ए CA इंटर या कैफ क्वालिफाइड, तो उसको मैं इंडक्ट नहीं कर सकूंगा ना. सो ये वो मिसमैच है जो एज अ एप्लीकेंट मैं एक्नॉलेज नहीं करता हूँ और फिर मैं ये कह रहा होता हूँ कि जी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुझे ऑफर. या दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अलाइंड नहीं है. अब एक चीज़ अगर अ फ्यू ईयर्स बैक इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर यू टू अप्लाई फिजिकली. लेटर बॉक्सेस होते थे जिसमें आप रेज्यूमेस ड्रॉप करते थे. दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ. I know of the Middle East, you need to have a functional mobile phone that can receive calls. हम उसके ऊपर नंबर प्रिंट कर देते हैं लेकिन हम वापस पाकिस्तान आ जाते हैं. So these things are which create gaps. You should make it easier for the employer to find you. The employer will not go out of the way to find you. And there is a skill point as well. कि skills होने भी उस job requirement के accordingly काफी relevant ना. It has to be relevant to that. अब why would somebody compromise? आप ही वाली बात को मैं extend करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं उस pool में, तो they will pick out the best fit. तो अगर मेरा वो skill set नहीं है, why would they want to hire me? Right. चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने डिटेल में गाइड किया. Pleasure. और आपकी बातों से तो यही लगता है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है उसको एक्चुअली आई वुड से कि उसको थोड़ा सा ना डिफाइन गलत कर दिया गया आज के तनाजुर में. सो अकाउंटेंट्स एलिमेंट रहेंगे. Correct. और इसमें एक बिजनेस इंटेलिजेंस का भी है कि लाइक उस डेटा को कैसे यूज़ करना है, जो कि हम पॉइंट एक मिस कर गए कि लाइक उन जो डेटा हमारे पास अकाउंटेंट्स के तौर पे आ गया है, लाइक हम बिजनेस को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको एनालाइज करके कि जो बिजनेसेस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. एग्जैक्टली. दैट्स इन फैक्ट मोर ऑफ अ फाइनेंस गाय जिस वक्त अकाउंट्स बन गए हुए हैं और उस डेटा को एनालाइज करके और उस पर डिसीजन मेकिंग करनी है. सो दैट इज समथिंग व्हिच एज ऑफ नाउ द कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट डू फॉर अस. दैट इज वेयर वी नीड टू यूज आवर ब्रेन्स एंड वी रियली नीड टू. देखिए, कंप्यूटर या AI हैज़ a finite set of possibilities. उसको extrapolate करना, that is जहाँ पे human behavior आ जाता है कि assumptions लेके उसको project करना, फिर assumptions को change करना. As I might be outdated, I don't know, I'm not a tech guy, लेकिन मेरी understanding के मुताबिक I don't think software can do that as of yet. In the future maybe yes. और फिर वही बात है, देखिए ना, industrialization भी हुई थी जिस वक्त machines took over human labor. Right. Humans did not go out of work. We needed supervisors for those machines. So we need to enhance our skill set ताकि we stay relevant. शायद वो जो एक contemporary bookkeeper, yes, they will die out for a lack of better words, but we need to stay relevant, update our skills, enhance our vision to find places where we can add value to the entire supply chain. Right. So that's my take on it. I don't think they're dying out anytime soon. And as long as businesses continue, which will continue for the eternity,
there is somebody who needs to write the books, make sure everything is compliant, give assurance on those things, legally guide them, manage transactions for them. Mergers and acquisitions are things that computers cannot do for you. आपसे सर बात करना तो काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक पॉइंट से पॉइंट निकलते हैं, लाइक अभी जैसे ना सस्टेनेबिलिटी है, एक नई दुनिया ओपन हो रही है अकाउंटेंट्स के लिए, फर्म्स जो है उसका प्लान कर रहे हैं कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए, ऑडिट रिपोर्ट में एश्योरेंस में पार्ट बन रहा है, सो अकाउंटेंट्स विल बी रेलिवेंट इंशाल्लाह. 100%, 100%, inshallah. Thank you so much, sir. Always a pleasure.